Good morning, students. Welcome to online political science class again. Again, we are moving towards the chapter. That chapter is US hegemony in world politics. That is chapter 3. Now, we are coming to the end of this chapter today with so many things that we have done. Okay, we have seen how did US came out as a hegemonic power after the disintegration of USSR. That is in 1991 when Soviet Union or USSR one superpower collapsed. Okay, that time the bipolar system has ended and there came an unipolar system, and then US is started hegemonizing the world, is influencing the world, appealing the world. Okay, what to say, attracting the world, maybe sometime by forcefully also. Okay, then in so many systematic way or in unsystematic way, it was seen that US is still hegemonizing the world. So today we are living in what type of world? We are living in an unipolar world, and the boss of this world is US, as it is assumed today. Okay, so in this chapter, so far we have covered up so many areas. Today we came up to the winding up of the other area, that is the last part of this chapter perhaps. That is what Indo-American relationship means, India-American relationship. Okay, so to start the story of India-America relationship, first of all I have to go to the background. Okay, uh, when during the Cold War time, India was not a good friend of US, as you have already known, I think so. Now, why? Because that time when US went up with its ally system, wanted to have an ally system or an alliance with a NATO pact. Okay, US went up and they have wanted to have a friends. Okay, and in that processing, they have thought that maybe one of the country, because at that time from the Asian continent, one of the country which is a bit influential that time, maybe after China, maybe India, that was assumed by America that time. So they thought maybe if India was taken into their pocket, okay, so then maybe that they also take other countries, other Asian countries into their pocket also, because along with India those countries may also come. Okay, that was their assumption or whatever. But afterwards it was seen that things didn't work as they have thought. So what happened at that time? Instead of going to the alliance system or ally system, okay, India has turned up in other way. What they have done? They have done or they have created the thing called NAM, an organization, non-aligned movement, or an organization in which so many countries have joined up, so many underdeveloped countries, least developed countries have joined up together, and they have thought of the first motto of making NAM was that time what? To keep aloof from the bloc system. Okay, that was created by the two superpowers. So obviously that time US thought India is could have been a good friend, good partner that time, but it was not happened. Okay, as US has thought maybe, and from that time US was not liking India. Okay, and afterwards, slowly by slowly things went wrong. Okay, things went wrong, and still lots of time went up, and India was not liked by America. Okay, till 1991 when India, like Soviet Union has disintegrated that time. So at that time, once upon a time, the Soviet Union or USSR was a good friend of India. Okay, not because of superpower country, but they have done many types of trade business. They have done so many strategic relationship, different types of things. Okay, economic deals and so things. So when 1991 USSR collapsed, that time India also needed a market, because India's economy was not growing in a very soundly manner.
So they also wanted to have a good, a strong country behind them. Okay, India. So what happened that time? They wanted to, again India also wanted to liberalize its economy. Okay, वो चाहते थे कि उनका जो उनका जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उनका जो इकोनॉमिक जो एरिया है उसको वो लोग बूस्ट अप करे और वो बाहर के कंट्री के साथ वो अपने आप को ज्वाइन करे, बिकॉज उन्होंने देखा कि इंडिया ने देखा क्या कि सोशलिज्म पॉलिसी जो है या फिर जो भी दैट टाइम गोइंग ऑन, दैट वाज नॉट वर्किंग आउट सो वेरी गुड वे में. So that time India 1991 they have opened up their economic thing in a thing called, it is turned into thing called LPG, liberalization, globalization and privatization. Okay, that was at the time Congress government and they have adopted this thing called LPG system. So India has been opened up and jumped into the इंटरनेशनल मार्केट. बहुत सारे कंट्री के साथ उन्होंने अपना पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया. बहुत सारे एमएनसी ने भी आना स्टार्ट किया इंडिया में. बट बहुत सारे के साथ जो सबसे बड़ा जो हुआ वो था अमेरिका. ओके, so 1991 that time America also, that time after Cold War finished, in USSR went up, they also needed some strong countries in Asian continent. Okay, उनको हमेशा ही चाहिए था कि एशियन कॉन्टिनेंट के टाइप एरिया में कोई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री उनका पार्टनर बने, उनका दोस्त बने. ओके, मे बी इन इकोनॉमिक टर्म्स, मे बी इन अदर वे ऑल्सो. सो दैट टाइम इंडिया और अमेरिका दोनों का ये तालमेल जोड़ गया एंड the process went on. Okay, the process went on and they have done, or they have turned itself into friendship. Okay, and slowly by slowly वो जो बहुत साल में नहीं हुआ था, they started to grow up in a very slow manner. Okay, so India has got a very strong country behind them that time. उसको एक strong country चाहिए था उस टाइम में. And to liberalize its economy, to bring up MNC in their country, to boost up their economy, okay, to remove or to reduce the thing called जो ये था ना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो भी कुछ ये सब कुछ हटाने के लिए उनको चाहिए था ये बहुत सारा. सो इसके लिए अमेरिका वाज ए गुड फ्रेंड. ओके, अगर वो आ जाए तो इट हैपेंड लाइक दैट. अमेरिका हैज जॉइंड अप विद इंडिया एंड बहुत सारा जगह में देखा गया, बहुत सारा रिलेशनशिप में घुसे लोग, इकोनॉमिक टाइज बना, बहुत सारा जो क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं वो सब कुछ डील हुआ. बहुत सारे ऐसे कॉमन डील भी हुआ है. ओके, एंड इंडिया एंड अमेरिका स्टार्टेड टू लिसन टू वन अनदर. एंड अमेरिका जो ज़्यादातर बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे कि दे हैव स्टार्टेड learning the process of America, India. Okay, because they have always thought in a very wrong motive. India को बहुत wrong motive में लिया गया था by America. But afterwards they started learning day by day about the Indian system, Indian economic and all these things, and they have thought India is that country which is a very peaceful country. Okay, it won't go in any type of thing को जो होता है ना वो कुछ एग्रेसिव नेचर में जाना एंड ऑल दिस थिंग्स, इट वोंट गो थ्रू. और एक इकोनॉमिक डील के लिए अगर हम जाए तो हमें भी एक बहुत सारा फायदा हो सकता है. सो इंडिया अमेरिका है स्टार्टेड बिल्डिंग अप और डेवलपिंग और क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग अप देयर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया. डिफरेंट जोन में, डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट ब्रांचेस में उन्होंने अपना एमएनसी खोलना शुरू किया अदर देन अदर कंट्रीज. ओके, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री तो आए बट अमेरिका केम अप. तो यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारा जगह पे पार्टनरशिप तो स्टार्ट हो गया. ओके, बट हम जब देखते हैं कि इंडिया के लोग अमेरिका में क्या कर रहे हैं. ओके, सो आपको अगर पता है बहुत सारे लोग जो हम बोलते हैं ना जो एनआरआई, जिसको हम बोलते हैं एनआरआई, तो इंडियन मेनी ऑफ द इंडियन पीपल वेर देयर इन अमेरिका, दे हैव सेटल्ड डाउन इन अमेरिका. ओके, बहुत स्टूडेंट्स जो जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए भी जाते हैं वहाँ पे. देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन देयर स्टडीज फिनिश्ड अप दे आल्सो टेक जॉब्स देयर. बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं. ओके, तो मेनी ऑफ इंडियंस वर फाउंड इन अमेरिका आल्सो. ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिखा है बोर्ड वर्क में. हम देख लेते हैं फास्ट ये बोर्ड वर्क जो हमने किया वो क्या चीज़ है.
ओके तो चलो स्टूडेंट्स हम जाते हैं बोर्ड में. सो लेट्स स्टार्ट. सी हियर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 लाइन. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया वाज एन ऑपोजिट साइड ऑफ यूएस. आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इंडिया केम क्लोजर टू यूएस, जो मैंने आपको बोला ये. ओके नाउ सी सम फैक्ट्स अबाउट इंडो यूएस रिलेशनशिप में. US accounts for about 65% of India's total export in software sector. तो क्या है यहाँ पे 65% ऑफ जो यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे 65% जो ये जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है दैट वाज डन बाय यूएस इंडिया. तो एक्सपोर्ट एरिया में इंडिया टोटल एक्सपोर्ट एरिया में 65% जो है वो यूएस एब्जॉर्बेंस है. ओके तो दैट वाज व्हाट, कौन सा क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यू सी 35% ऑफ बोइंग्स टेक्निकल स्टाफ आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो इफ यू नो ये बोइंग, ओके इफ यू नो बोइंग इज एन एरोनॉटिक जो इंडस्ट्रियल जो सेटअप है अमेरिका में, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये. बोइंग कंपनी जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी. ओके सो दिस थिंग, ये जो कंपनी है इस कंपनी में स्टार्टअप इंडियन जो स्टार्टअप है वो कितना में है, 35%. इंडियन लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं दे आर ऑफ 35%. ओके जो वहाँ पे स्टाफ है, बोइंग कंपनी में स्टाफ है वहाँ पे. तो सोच लो इतना एक विशाल सा एक कंपनी है अमेरिका का और उसमें काम कर रहे हैं वो भी बहुत सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यू सी next one is more than 3 lakh Indians work in Silicon Valley. Now ये जो Silicon Valley, what is Silicon Valley? In America there is a place जहाँ पे इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली. ओके तो सिलिकॉन वैली जो है यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनीज जो है, ओके lots of great companies, strong companies of America were set up in Silicon Valley. Okay सो इन दैट एरिया ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है यहाँ पे और दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज वेर सेट अप देयर एंड इट वाज नोन एज सिलिकॉन वैली. ओके तो यहाँ पे मोर देन 3 लाख इंडियंस वर्क इन दैट एरिया, इन दैट सिलिकॉन वैली एरिया. कंपनीज जो यहाँ पे सेटअप हुआ है. ओके नेक्स्ट वन इज 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन. तो बहुत सारा जो जॉइंट वेंचर जो हम लोग बोलते हैं ना जॉइंट वेंचर, बहुत सारा जॉइंट वेंचर जो है वो 15% में दिखाई देता है वहाँ पे इंडिया एंड अमेरिका का. तो ये जो देखते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पे देने से मिलता है क्या कि नहीं इंडिया एंड अमेरिका ऑलरेडी देयर, बहुत सारा चीज कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ पे. ओके मे बी वंस अपॉन अ टाइम अमेरिका डिडंट लाइक इंडिया बट एज टाइम वेंट ऑन they have needed one another for their economic support, for their global support. बहुत सारा issues है, many types of issues were there that was happening in the world and for that also maybe a superpower, maybe America a superpower, but they also need support from all parts of the world. Okay all India पूरी जो जितने भी states है जितने भी countries है. Okay so from everywhere they need support. Okay so India is that country who is on very types of issues they are started supporting America. Okay so from one of these issues I can take up like climate issues, climate change, climate ये जो environmental problem, the environmental problems whatever is being seen today, observed today, those things are discussed on the international arena and from there one of the a country which has a great say. Okay actually one or two of the country which has a great say, that are two countries, one is America and one is India, who have a common say on those climate problems, environmental problems. Okay now next one if I go on then that was is terrorist problem. Okay see India is suffering from terrorist problem from lots of times. Okay बहुत सारा वक्त से टेररिस्ट प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा था. अभी काफ़ी दिनों से थोड़ा सा कम गया ये बट मैनी टाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक, ओके अक्षरधाम टेम्पल अटैक, बॉम्बे अटैक. ओके देन अदर थिंग्स व्हाट
लॉट्स ऑफ थिंग्स. अगर मैं सबका नाम मुझे लाइक इफ आई गो ऑन इट वोंट फिनिश अप. ओके, so many areas had been time to time being attacked by terrorist groups. And in America also small terrorist attacks were being done by terrorists. But one of the great attack that was done, जो हमने already पढ़ा, वो कौन सा था students? That was 9/11 attack. Okay, 9/11 2001 attack done by Al Qaeda groups. So that has brought India and America into a close पार्टनरशिप. जो बोलते हैं ना, आपके घर पे भी सेम प्रॉब्लम हुआ, मेरे घर पे भी सेम प्रॉब्लम हुआ, चलो लेकिन उस इशू को लेके हम डील करते हैं, सॉल्व तो करने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो सॉल्व हो सकता है. तो दैट वाज डन बाय इंडिया एंड अमेरिका. सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन दिस अटैक वाज हैपेंड इन अमेरिकन सॉइल, दैट टाइम Bush administration has declared that one terrorist attack जो है global war on terror. What? Global war on terror. मतलब टेररिस्ट के ऊपर में ग्लोबल वार. अभी ये ग्लोबल वार होगा, पूरा वर्ल्ड ग्लोबली विल गो अगेंस्ट द टेररिस्ट. ओके, तो that was done. India has always supported in this issue. Okay, climate change issue में इसे सपोर्ट किया. Even in this terrorist issue also it was supported by India, because दोनों ही ऐसे थे कि दोनों ने इसको देखा, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी बहुत सारा चीज हुआ है, उनके प्रोसेस में गया है ये. ओके, एंड बहुत सारा जो लॉस है वो लॉस भी हुआ इंडिया में एंड अमेरिका में भी also. So they went on and they have started to combine together, have started to fight against global war on terror. Okay, now और एक इशू अगर मैं लूँ जैसे कि न्यूक्लियर प्रॉब्लम. ओके, सो ये इशू जो है ये बहुत सारा काफी पुराना इशू है. सी, व्हेन न्यूक्लियर वेपन्स वर बीइंग मेड बाय 5 countries. Okay, that was one is US, one is UK, one is Russia, one is France and China. Okay, तो 5 countries has made these nuclear weapons. तो ये 5 कंट्रीज के बाद में उनको लगा कि अभी हमें एक ट्रीटी बनाना चाहिए जहाँ पे और कोई फर्दर कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को ना मना सके. ओके, स्पेशली एशियन कॉन्टिनेंट में कोई भी ना मनाए, बिकॉज दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एंड दे आर नॉट सपोज टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स. बट दैट टाइम इंडिया हैज मेड 1990 जो 1998 इन ऑल दिस टाइम जो चला. ओके, एक्चुअली 74-75 एक्चुअली इट वाज फ्रॉम इंदिरा गांधी टाइम. It was from Indira Gandhi time that it was started. Okay, making up developing of nuclear weapon. So it was gone on the 1998 again, and Pokhran 1, Pokhran 2 testing has been done and nuclear weapon has been made by India. When India has made nuclear weapon missiles जब बना लिया, America has not liked that thing. अमेरिका को चाहिए था कि ये नहीं हो सकता, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है. ओके, दैट वाज देयर कॉन्सेप्ट. एंड इवन चाइना हैज ऑलवेज अपोज्ड दैट इंडिया शुड नॉट गो फॉर ऑल दिस थिंग्स. ओके, चाइना वांट्स टू रिमेन पावरफुल इन एशियन कॉन्टिनेंट. तो ये सब कुछ होते होते क्या हुआ, इंडिया वाज फोर्स्ड टू साइन NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ट्रीटी उन लोगों ने बनाया था 1967 में. Okay, so America or ये 5 nuclear countries they have forced, especially America has forced India to sign this NPT, but India has not signed. उल्टा इंडिया ने बोला that this is it is discriminatory. It was creating a difference between haves and have-nots. Okay, nuclear have and nuclear have-nots. Okay, तो rich और poor country में divide हो रही है सब कुछ, and this is not क्या बोलते हैं उसको, लीगल. एक तरह से लीगल कि हम उसको साइन ना करें. इफ यू promise us to reduce down your guns, weapons, arms, ammunition, nuclear weapons, and then we will go on. Okay, but America said, अमेरिका ये सब में वो अपने को एग्री नहीं कर पा रहा था. ओके, अमेरिका वाज नॉट गोइंग टू एग्री बिकॉज अमेरिका इज अ सुपर पावर कंट्री. सो ऑब्वियसली क्या हुआ, इंडिया डिडंट साइन NPT. ओके, आफ्टरवर्ड्स 1998 another treaty came into being, and that was what? Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT हम जिसको
बोलते हैं. Comprehensive test ban treaty that time came, and then afterwards it was the American president was Bill Clinton that time, but it was not done by India. Even Bill Clinton came to India, सोचा कि इंडिया को मना ले किसी भी करके. ओके, बट दैट टाइम बिल क्लिंटन केम, बट सब कुछ जो भी हुआ, बट उस टाइम में ये साइन नहीं हुआ. इन इंडिया उन्होंने फिर क्या बोला, वी हैव मेड द वेपन्स फॉर आवर सेफ्टीनेस एंड वी आर गोइंग एंड एग्रीइंग यू or to the world that we will use nuclear weapon only for safety safety area के लिए हम रख रहे हैं, or we will not use any nuclear weapon until and unless some other countries use it. Okay, so no fast nuclear weapon use, ये एक शब्द, एक जो डायलॉग इंडिया ने बोला था, but America was not listening to them and it went on like that. Okay, so many leaders has changed. When Bush came, George Bush came, he has tried to convince again India. Okay, but that time also थोड़ा सा वो बाउंड नहीं, बैंड हो गए थे, और थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि अभी इंडिया was turning up into a very much इकोनॉमिकली वो पावरफुल होते जा रहा था इंडिया. ओके, तो 2008 was the time जब फिर अमेरिका ने सोचा, ओके लेट्स हियर इंडिया ऑन दिस न्यूक्लियर इशू. तो इंडिया का जो टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन को लेके फिर बुश एडमिनिस्ट्रेशन आया, एंड दे हैव देन डन वन deal, and that deal was known as nuclear deal. 2008 nuclear deal. Okay, it was not NPT, it was not CTBT, but it was a nuclear deal. So India was given to explore nuclear weapons, to testing up nuclear weapons, to develop nuclear weapons, but not to use. जो उन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया. ओके, दैट वाज वन ऑफ द थिंग जो इशू बहुत दिनों से चल के आ रहा था, बट इट वाज resolved again. Okay, that time. And after that one, when Bush administration came in, Bush has told that India was a great friend of America. Okay, उन्होंने बोला कि India was a great friend of America. Even Barack Obama, afterwards when Barack Obama came, he also said कि India was a great partner of America. Okay, and India was one of the peaceful country, and we can do lots of things with India. That was told by Barack Obama. Okay, and afterwards came जो ये बहुत सारे leaders आए, फिर Barack Obama also came to India. Okay, Barack Obama came to India. Manmohan Singh went to America. That exchange of things, ideas, economic deal has been going on at that time. Okay, बहुत सारा चीज हुआ. Then when Donald Trump came, okay, American President Donald Trump, that time also he was in a very good mood to make India as their partner. Okay, in many issues. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम एक 100 वे का एक उन्होंने एग्रीमेंट किया उन्होंने, एंड 100 वे एग्रीमेंट में उन्होंने इंडिया को जो उन्होंने बहुत सारा चीज़ों में उन्होंने उनको रिलैक्सेशन दे दिया. And they have promised, America has promised to start up so many new things with Indian companies, Indian economic ties के साथ वो join up होंगे, बहुत सारा वेंचर होगा, बहुत सारा चीज़ का जो joint वेंचर होता है ना, वो सब कुछ हो जाएगा. ओके, अमेरिका और इंडिया का economic ties being done in a very smooth manner, means going on in a very smooth manner from those time already. Okay. And afterwards they have also said that it was a great partner. Okay, great partner, and so many strategic relationship could be done with India. Okay, so again now after all these leaders, now today अभी जो American president है Biden, now Biden has also in a very good manner. First of all, he didn't went up with India, इतना नहीं थे close, but now it's going on. So today also Biden has announced that India again could be a good friend of America. Okay, so those whole years and सब कुछ जो चला गया होते जा रहा है, from all these things we can say that India has been going on a very important export relationship with America.
इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया अमेरिका के साथ। एंड वो जो था ना एक बैंड वागन स्ट्रेटेजी, तो कुछ उस तरह से बैंड वागन स्ट्रेटेजी टाइप का पॉलिसी फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अमेरिका को भी चाहिए एक पार्टनर एशियन कॉन्टिनेंट में, और इंडिया को तो चाहिए ही था एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो सपोर्ट दे सके। ओके, अमेरिकन कंपनीज में इंडिया का कोई जॉइंट वेंचर हो सके, तो दे गॉट वन अनदर, एंड दैट इज द इंडो यूएस रिलेशनशिप। ओके, दैट वेंट ऑन and now it's going on very smoothly. So let's hope, अभी हम होप ही कर सकते हैं, let's hope that this will go on in a very good way, because today our Indian Prime Minister Narendra Modi, he has also going on with a good relationship with the American area, American soil, and American leaders, president. Okay, so let's see, let's hope that one of the superpower country which is still alive now and hegemonizing the world, so we are being also influenced with this American ways of life. Okay, जैसे कि हमने देखा बहुत सारा एरिया में हार्ड पावर, then soft power, then structural power, we have seen how is America hegemonizing the world. So maybe in India also some way or the other being influenced, we people in India are being influenced by American culture, American way of life, American style. Okay, एंड इंडिया जैसे कि मिलिट्री एरिया में अगर हम बोले तो इंडिया हैज ए गुड मार्केट ऑन मिलिट्री आर्म्स एमुनेशन खरीदने में। इंडिया हैज ए गुड मार्केट विथ अमेरिका। ओके, सो देयर इज ए बूस्टिंग ऑफ टाइज गोइंग ऑन, ओके, बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि ये जो इन्फ्लुएंस, ये जो हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस है, उसके बाद हमने देखा कॉन्स्ट्रेंट्स जो चला, बिकॉज दिस हार्ड पावर जो इन्वेशन, अटैक, कंट्रोल जो बहुत सारा जगह में इंडिया अमेरिका ने किया। ओके, उसके लिए बहुत सारा बाद में उनको थोड़ा लॉस भी हुआ, उनको बहुत सारा चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उनको। ओके, बट आफ्टरवर्ड्स थिंग्स वेंट ऑन एंड इज गोइंग ऑन। ओके, उसके बाद कॉन्स्टेंट का एरिया देखा हमने बहुत सारा चीज़। ओके, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, नेटो, ओके, ओपन सोसाइटी, ये सब देखा। और उसके बाद हमने क्या देखा, वेज टू ओवरकम यूएस हेजेमोनी, तो बैंडवागन स्ट्रेटेजी, हाई स्ट्रेटेजी, एंड जो है नॉन स्टेट एक्टर, चैलेंजेस फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये सब कुछ हमने देखा इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर टुडे आज हम खत्म कर रहे हैं। टुडे वी आर समिंग अप दिस चैप्टर, वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर, यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट यूएस एंड इट्स हेजेमोनिक पावर। ओके, so students, I hope you have gone through these videos, and I hope that you can understand whatever have been explained in these lots of different videos that came across you. Okay, so thank you students.